Thanks for the amazing response on the last forearm follow along workout routine with the hand gripper and काफी लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया था कि उनको बाइसेप्स का भी एक फॉलो अलॉन्ग रूटीन चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक रेजिस्टेंस बैंड बेस्ड फॉलो अलॉन्ग बाइसेप वर्कआउट। सो व्हाट्स अप एवरीवन, कीर्तन शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ एंड लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वर्कआउट। तो इस रूटीन में हम 7 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं सो एज टू हिट द लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स एज वेल एज द ब्रेकियोरेडियस एंड द ब्रेकियालिस मसल्स जो हमारे फोर आर्म्स के होते हैं। तो सारे आर्म मसल्स को हम सही तरीके से हिट करेंगे यूजिंग ए रेजिस्टेंस बैंड। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बैंड आपको चूज करना है दैट कैन वेरी फ्रॉम ए लाइट रेजिस्टेंस बैंड फॉर द फर्स्ट राउंड एंड जैसे जैसे आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाएंगे तो चाहिए तो आप रेजिस्टेंस बैंड का जो रेजिस्टेंस है उसको मीडियम या हैवी पे भी लेकर जा सकते हो ताकि आप और भी इंटेंसिटी बढ़ा पाओ इस वर्कआउट का। अगर आपको नहीं होता है तो आप सेम रेजिस्टेंस भी रख सकते हो एंड अगर आपके पास डिफरेंट रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप जो डिस्टेंस है पैरों का उसको थोड़ा वाइड कर सकते हो या फिर आपका जो एंकर पॉइंट और आपका जो हाथ का डिस्टेंस है उसको कम कर सकते हो जिससे रेजिस्टेंस और भी काफी बढ़ जाएगा विद ऑल दीस एक्सरसाइजेस ताकि आप हर एक राउंड में आपका जो रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा पाओ। सो नाउ लेट्स लुक इनटू ईच ऑफ दिस एक्सरसाइजेस जिनको आपको 30 सेकेंड्स परफॉर्म करना है और जो भी अल्टरनेटिंग सिंगल आर्म एक्सरसाइज होंगे उनको आपको 1 मिनट के लिए परफॉर्म करना है और इन सारे एक्सरसाइज के बीच में आपको 10 सेकेंड्स का रेस्ट मिलेगा सो दैट यू कैन एडजस्ट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस एंड रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। एंड अगर आपको 10 सेकेंड्स रेस्ट काफी कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर थोड़ा रेस्ट और लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे प्रोसीड कर सकते हो। सो नाउ लेट्स लुक इनटू ईच ऑफ दिस एक्सरसाइजेस इन डिटेल। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज द बेसिक बाइसेप कर्ल जहां पे आपको एल्बोस को अंदर की तरफ रखना है, पाम्स को ऊपर की तरफ फेस करना है एंड विदाउट मूविंग योर एल्बोस you have to perform the curls for as many reps as possible in 30 seconds. The second exercise is the hammer curls जहां पे आप रेजिस्टेंस बैंड को ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड करोगे जहां पे आपका थम्स ऊपर की तरफ पॉइंट होगा और आपका एल्बोस अगेन अंदर की तरफ रहेगा और एल्बोस मूव नहीं होगा एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द कर्ल्स for 30 seconds. The third exercise is the alternating inner curls जो कि आपके लॉन्ग हेड को ज्यादा टारगेट करता है। तो यहाँ पे आपको एल्बोस को अंदर की तरफ रखना है और आपके आर्म्स को भी अंदर की तरफ मूव करना है इस तरह से। तो you will be able to see the outer side of your biceps from the front view. तो इसलिए आपको ऐसे अंदर कर्ल करना है and again you have to do this for 1 minute in the alternating manner. The fourth exercise is the outer curls जहां पे आपका जो इनर साइड है बाइसेप्स का वो आपको सामने की तरफ से दिखना चाहिए। तो इसलिए आपको एक्सटर्नली रोटेट करना है आपके शोल्डर्स को और जितना बाहर आप रोटेट कर सकते हो उतना बाहर रोटेट कर लो आपके आर्म्स को एंड कीप योर एल्बोस टक्ड इन एंड देन स्टार्ट टू कर्ल लाइक दिस। You will feel an intense burn on the short head of your biceps जो कि हमारे इनर साइड में होता है। The next one is the drag curls। यहाँ पे हम हमारे लॉन्ग हेड को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं बट आपको आपके एल्बोस को आपके बॉडी के पीछे रखना है एंड देन यू हैव टू ट्राई टू ब्रिंग दैट रेजिस्टेंस बैंड टू योर चेस्ट लाइक दिस। When you do that, you get a good stretch on your long head and an intense contraction when you bring it closer to the chest. So this way you'll be targeting the long head of the bicep. The next one is the reverse inward curls जहां पे आप आपके पाम्स को फ्लोर की तरफ फेस कराओगे और धीरे से एल्बोस को अंदर रखते हुए बैंड को अंदर की तरफ मूव करोगे। This will help you to hit the brachialis and the brachioradialis muscle of the forearms. So it will move like this inward, keeping the elbows tucked in. एंड द लास्ट वन इज द वेटर कर्ल्स जो कि अगेन आपके लॉन्ग हेड को हिट करेगा। वहां पे आपको पाम्स को ऊपर की तरफ फेस कराना है और दोनों भी एंड्स जो है रेजिस्टेंस बैंड को उनको क्लोज लाना है एंड पाम्स को ऊपर की तरफ फेस कराते हुए यू हैव टू कीप कर्लिंग सो दैट आपका दोनों आर्म्स अंदर की तरफ आ रहे हैं और आपको एक इंटेंस बर्न फील होगा ऑन द आउटर साइड ऑफ योर बाइसेप्स। तो आई थिंक आपको सारे एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ गया होगा। अब आप टीवी पे प्ले करके या फिर मोबाइल पे प्ले करके मेरे साथ ये पूरा रूटीन फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन दिस वर्कआउट एंड फील एन इंटेंस बर्न एंड द पंप ऑन आवर बाइसेप्स। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So congratulations on finishing this intense bicep workout. And अभी तक मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कितना इंटेंस वर्कआउट हम कर सकते हैं. एंड अगर आपको और भी गेन्स चाहिए बाइसेप्स का, तो आई वुड सजेस्ट कि और भी 2 राउंड ऐड करना. यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो या फिर सेम रेजिस्टेंस रख सकते हो. एंड बिफोर यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट राउंड, यू कैन टेक a rest of 60 to 90 seconds. This will help you to maximize your overall biceps and forearm gains. And अगर आप और भी ऐसे follow along workout routine चाहते हो, तो make sure you comment down below. And if you found this workout valuable, then make sure you like the video, share with everyone, and subscribe to our channel for more such content on workout and nutrition. So we'll meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.